वी आर विथ आवर पार्ट 2. ओके, इसमें भी हमें ये चेक करना है कि आइदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एंड इफ दे आर कंसिस्टेंट देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन graphically. Okay, so x minus y equals to 8, so this can be rewritten as what? X minus y equals minus 8 equals to 0 लिख सकते हैं. x minus y minus 8 equals to 0. Similarly 3x minus 3y equals to 16 can be rewritten as 3x minus 3y minus 16 equal to 0 लिख सकते हैं. Okay, this means what? If you compare this, then a1 equals to what? a1 हमें कितना मिलेगा? 1. Our b1 equals to what? minus 1, and c1 equals to what? minus 8. Similarly a2 will be equals to what? 3. Our b2 is equals to what? minus 3, and c2 equals to what? minus 16. Is that clear? Now अगर अब हम इसे further solve करते हैं, so what we will get? Let us see. a1 upon a2 will be equals to what? 1 upon 3. Is that clear? a1 upon a2 will be equal to 1 upon 3. Now similarly b1 upon b2 will be equals to what? minus 1 upon minus 3. This means what? This is also equal to 1 upon 3. Okay, so this is our second ratio. Now we move on to our third ratio, c1 upon c2. It is equal to minus 8 upon minus 16. तो अगर हम इसको further solve करें, we will get what? 1 upon 2. So first and second ratios are equal. a1 upon a2 and b1 upon b2 are equal. But is it equal to c1 upon c2? No. So what we will write? Therefore we can say that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2. और अगर ये कंडीशन होती है तो हम ये देख चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इफ a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but if it is not equal to c1 upon c2, then we get no solution. हमें क्या मिलता है? नो सॉल्यूशन मिलता है, राइट? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore system of equation has what? No solution. And if system of equation has no solution, तो हम ये पढ़ चुके हैं. If the system of equation has no solution, then the equations are inconsistent. Therefore we can say that the pair of lines are inconsistent. Therefore pair of lines are inconsistent. Is that clear? और क्योंकि ये इनकन्सिस्टेंट है, देयरफॉर वी डोंट नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, इसलिए हमको ग्राफ प्लॉट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन पार्ट 2. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी पार्ट 3. थैंक यू.